Good morning, my dear student. I hope you all have enjoyed your winter vacations. Now today I am back with my IT session, and today we are going to start our next chapter, that is your last chapter, that is the chapter 6, that is introducing the Python. Now, uh, introducing the Python. What is the Python? Firstly, what is Python? Python is your programming language. What is the program? Program is the set of instructions. Through the set of instructions, you give some input, then the computer process it, and after that you will get your output. And this total process is known as the that you will this process you will use in your programming language. अभी तक आपने एप्लीकेशंस को यूज किए हैं जैसे कि एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें हमारी पाइथन को हम यूज कर रहे हैं. इन पाइथन यू विल राइट डाउन योर प्रोग्राम, एंड आफ्टर राइटिंग योर प्रोग्राम यू विल सेव इट एंड देन यू विल रन इट. आप कुछ भी कैलकुलेटर्स भी आप यूज करते हैं. कैलकुलेटर्स में आप प्लस पे क्लिक करते हैं और दो कुछ कोई भी टू नंबर्स की इनपुट प्रोवाइड करते हैं. इट गिव्स यू द addition of that two numbers, but that is through any program. And some software, some programming language, it has used some program in some programming language, and then it is giving you the output. Now today we are now I am here to tell you that how you can write your program. But we can use different languages to write down the program. C++, Java, many languages are there, but today we are starting with our Python language. In Python language we will write down some instructions, many instructions. When you will write down many instructions, then set of instruction is known as a program. After writing the program you will save it and then you will run it, and after that you will get your output. Now let's come with me for this Python language. As I told you, Python is a programming language. Programming language means that is the set of instructions, and that is the general purpose language. जो हम general purpose language means that कोई particular special किसी particular area के लिए नहीं बनाई गई है. We can use it for our general purpose, some addition, some multiplication, some making some video game, फॉर क्रिएटिंग एनी ऐप. तो हम जनरल पर्पज के लिए हम इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स इसके कुछ सिंटेक्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को आपको एज इट इज ही यूज करना है. अगर आप इसके रूल्स को वैसे यूज नहीं कर सकते देन इट विल शो यू सम एरर्स. फॉर एग्जाम्पल कि इसमें मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ केस सेंसिटिव का, लाइक दिस कि अगर आपने इसमें लिखना है इनपुट INPUT, तो इसका सिंटेक्स बना हुआ है कि आई कैपिटल आएगा एंड बाकी लेटर स्मॉल आएंगे. अगर आपने IN कैपिटल लिख दिया और PU स्मॉल लिख दिया तो वो इस चीज को नहीं लेगा. इट विल शो सम एरर. सो दैट इज केस सेंसिटिव. आपको इसके कुछ रूल्स को लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी हम कुछ अल्फाबेट्स ले रहे हैं, जो भी हम आइडेंटिफायर्स लेंगे, जो भी हम वेरिएबल्स लेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट आर वेरिएबल्स. तो हम उसको कैसे यूज करना है, उसका जो भी उसका करेक्टर लेना है, किसका करेक्टर कैपिटल होगा, किसका करेक्टर स्मॉल होगा. सो दिस लैंग्वेज इज नोन एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. Next is it is platform independent language. What do you mean by platform independent language? You can install this. You can install the Python on any operating system. आपके लैपटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, विंडोज 7 या विंडोज 10, तो आप किसी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड हो सकती है. सो दैट इज नोन एज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. नेक्स्ट इज इट इज फ्री टू यूज. आपको ये फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी नेट पे, आप उसको नेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर. अब नेक्स्ट थिंग, हाउ यू कैन डाउनलोड इट. देयर आर one website. Through this you can download it. You can install this Python on your PC. You will go on the www.python.org. आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है. देन यू विल सी यहाँ डाउनलोड का एक लिंक आएगा. उस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और हमें इसका कौन सा वर्जन चाहिए आपके बुक के अकॉर्डिंगली यू हैव टू डाउनलोड दिस Python 3.7.0.
you have to download this Python version. When you will download it, then it will show you finish. After that, that will be downloaded on your लैपटॉप. आपके लैपटॉप में जहां भी ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको इसके अंदर इसकी यहाँ पर एक आइकन दिखेगा, डेट इज डाउनलोड इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर. इंस्टॉल, जहां भी इंस्टॉल लिखा होगा आपको इंस्टॉल पे जाके क्लिक करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके रन करना है. व्हेन यू विल रन दिस इंस्टॉलर, आफ्टर दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन योर पीसी एंड देन यू कैन यूज दिस पाइथन लैंग्वेज. Now I will tell you that how you can use this language. After installing it, which type of window will appear in front of you. When your installation will be completed, then the window of the Python will look like it. Now I will tell you what are the components of the Python. There are the various components of the Python. At the upper end of this window, you will see Python 3.7.0 shell. It will show like this. This is the title bar of your programming language. That is known as the title bar. After that, it will show some options. That is the menu bar. In the menu bar, because you have used this menu bar in the Word, Excel, PowerPoint. That is the file, edit, shell, debug, different option according to the different applications and different programming language. That is your title bar. Next is will show you a menu bar, and after that it will show some written material about the Python. What is Python? What is its edition? What is its version? And then it will show these three arrows like this. That is your area in which you will write down your commands and you can write down your programs. That is your area in which we can write down. So that area is known as the script area. तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट एरिया. So that is your title bar, that is your menu bar, and that is your script area. And at the last of that window, at the bottom of the window, you will see the status bar. What is the status bar? Status will tell you about the status of your Python program. That status bar, it is in the status bar, it is showing you these two attributes, that is line 3 and the column 4. Now that is first line, second line, and that is your third line. आप कहाँ पर हो जहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो? इट विल शो your cursor here. So this cursor is first, second, and at the third line, and the column is first column, second column, third column, and the fourth column. Is from this fourth column we can start to write our commands and we can start to write our program. So it is showing you the status of your cursor in your program. So these are the components of your Python language. अब पाइथन लैंग्वेज में हम यूज कैसे करते हैं? हाउ वी विल यूज दिस पाइथन लैंग्वेज? दो मेथड्स हैं. हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके इस बुक में बहुत डिटेल भी नहीं है. हम पाइथन का सिर्फ यही चैप्टर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज कट डाउन इन योर सिलेबस. सो in this chapter we will do that what is interactive mode and what is the script mode. अब हम इसमें दो मोड्स में काम करते हैं पाइथन लैंग्वेज में. एक तो होता है इंटरेक्टिव मोड, जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो और जैसे ही आपने इंटरेक्ट किया वैसे ही इसने आपको आंसर दे दिया. हम इसके ऊपर इस सिंबल पे, ये जो स्क्रिप्ट एरिया है, इस स्क्रिप्ट एरिया में जैसे ये 3 सिंबल्स हमारे सामने आएंगे, हम कोई कमांड लिखेंगे, ये उसको परफॉर्म करेगा एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट इमीडिएटली. देन अगेन इट विल शो दीज 3 points. Again you will write down the commands, it will give you the answer. So line by line you will get the answers in this interactive mode. You will not write down the set of instructions completely. One instruction, then one output, then one instruction, then one output. That is known as your interactive mode. If you want to write down the complete program, that is the set of instructions, if you want to write down the set of instruction in one program and after that you want to save that program, then that mode is known as the script mode, जिसमें हम complete program लिखेंगे, जिसमें बहुत सारी instructions होंगी. लिखने के बाद उसको एक नए नाम से उस फाइल को सेव कर देंगे और उसके बाद जब हम उस फाइल को रन करेंगे तो सभी प्रोग्राम, सभी इंस्ट्रक्शंस को वो इकट्ठे एग्जीक्यूट करके हमें जो एक मेन आउटपुट होगी वो प्रोवाइड करेगा. तो दैट
we will write down in script mode. In today's sections, we will do only interactive mode. In the interactive mode, we will execute our commands line by line. Now let's see how you can use the interactive mode. Now let's come with the interactive mode. How you will open your Python in your PC after installation, after your installation completed. You will click on the starts, then you will click start, then you will click on all program. On all program, it will show this icon Python 3.7.0, and now we want to use the not a script mode, we want to use the interactive mode. Then after clicking in Python, it will show some many options. Then you will go on this options, that is IDLE options, that is used for interactive mode. Whenever you will click on this mode, your window will be look like this. ये आपका टाइटल आ जाएगा Python 3.7.0 और many lines it will show, and after these 3-4 lines it will show this icon, these 3 icons. Then after that we will start writing. Now there is a one function in the Python, that is the print function. In the print function, whatever you will write down, it will print that. So I have used the print function P is small. I told you it is a case sensitive, then you will not use the P letter capital, you will use the P letter small. PRINT, all letters will be small, then bracket start, and then I have written the hello world in inverted commas. And what is the function of, what is the purpose of the print function? It will print the line that you have written with this print function. Then you will press enter. As you will press enter, it will show this output hello world. उसने उसी लाइन को प्रिंट कर दिया. Next in print option, I have used 10 plus 5 6 is equal to. ये मुझे as it is चाहिए, तो मैंने इसको single quotes में लिख दिया. You can use double quote also. 10 plus 5 6 is equal to. Single quote started, single quote ended. And after that, ये इसका operation करेगा. मतलब it will do the functions of, it will do the addition of this, then comma, and comma के बाद 10 plus 5 6, it will just add these numbers and it will show the result. ये as it is आ जाएगा. जैसे ही आप enter press करोगे, it will show 10 plus 5 6 is equal to, यहाँ तक ये as it is आ गया. And after that comma के बाद हमने इसका result show करना है. 10 plus 5 6, it has do the function of this and it got the result, that is 66. Then it is showing here 66. Next print function 5 plus 5 we are using. As it is, we are using 5 plus 5. It is showing up to here as it is because it is written in single quotes. And then 5 plus 5 is equal to the as it is आ गया. And then 5 plus 5 is 10. So this is your interactive mode and it is showing all this. It is showing all this here. That is your interactive mode with the print functions. Now it will also use some calculations here. How it will use? Now we are using this interactive mode as a calculator. How you can use this as a calculator? After this sign we have write down 10 plus 20, that it is gives you the answer 30. Only मैंने print function use नहीं किया, so it is not writing anything. We have just used the I want to just use it as a calculator, so it is using 10 plus 20, then 45 divided by 6, that it is giving the answer 7.5. Here you have to press the enter के बाद ही आपको आंसर देगा. Now 67 mode 8, तो जो भी इसका क्वेश्चन था, it is showing here 45 multiplied में 78.5, then it is showing the answer. This is your interactive mode. यहाँ पे हमने command दी, इसने answer दिया. The next command, then answer. The next command, then answer. The next instruction, then answer. But it is not a program. This is the interactive program, and it is using as a interpreter जो एक एक line को interpret करता है और उसका हमें answer provide करता है. So this is all about your interactive mode in the Python language. So in today's sections we have completed that what is Python, how you can install the Python, how you can use this Python language in two modes, interactive mode and the script mode. But today we have discussed only the interactive mode. In my next session, in my next video, we will discuss about the script mode. Till then, thank you and have a nice day.